हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल। आपण मान जानिथिबे जुलाई मंथ रे हमर सबु एग्जाम हेबाकू जाउछि, लाइक ओडिशा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तार भी एग्जाम अछि एवं आपण मान जानिथिबे पीईओ रो एग्जाम भी अछि। आ वर्तमान नोटिफिकेशन पळि आसलानी हमर सीएचएसएल नोटिफिकेशन पळि आसी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रु। आपण मान समस्त अप्लाई करिवे 26 जून रु। आशा करुछि आपण मानकर प्रिपरेशन बहुत भल भाव चली। आपण मान जानिथिबे कंप्यूटर पार्ट टी बहुत इंपोर्टेंट रोल करथाय हमरो एग्जाम रे। सो आमे लास्ट क्लास रे बहुत गुडी एमसीक्यू क्लास कर सारलेनी। आज आमे स्टार्ट करिवा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो एमसीक्यू क्लास एवं नेक्स्ट क्लास रे मध्य आमे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रा आउ किछि भी वीडियो जानिबा एवं कंप्यूटर फंडामेंटल रे भी एमसीक्यू आनिबा। आपण माने समस्त नोट भी करूथिबे एवं आमर क्लास भी देखुथिबे। आपण मान जानिछंती जेमिति आमे मैट्रिक लेवल रे आमर संस्कृत एग्जाम टी आमर बहुत इंपोर्टेंट रोल करता है। कौन संस्कृत रे आमे जेति की मार्क रखिबा सेटा आमर मार्क रे बा डिवीजन रे हेल्प करता है। सेमिति कंप्यूटर टी मध्ये आमर एग्जाम रे कंप्यूटर बहुत इजी। आपण माने टिके भलो भाव रे मन रखले फुल मार्क भी आनी परिबे। सो स्टार्ट करिबा आमर एमएस एक्सेस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a type of Microsoft Access database object? से कहला ए भितरु Microsoft Access database object कोटा नुहे। ओके देखो माइक्रो मॉड्यूल टेबल ए सबु हमर Microsoft Access रे अछि, बट वर्कशीट ता क्यों ठारे अछि हमर Microsoft Excel रे हमें वर्कशीट कहताउ। हमें जानि जे पढैतिले लास्ट क्लास रे एक्सेल रे हमर जनरली प्रथमे तीनटा सीट थाए वर्कशीट, सीट 1 सीट 2 सीट 3 एवं जो टेबुलर सीट थाए से हमें हमर सब वर्क करथाउ। ओके सो एठी वर्कशीट ता हमर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट नाही। ओके नेक्स्ट, डैश इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। ओके देखंतु ऑटो नंबर करेंसी मेमो ए सब हमर एमएस एक्सेस रे अछि, बट पिक्चर नाही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी। मन रखतान बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत तरह आसी। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी 255। आंसर इज ऑप्शन सी 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेस डैश आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कहला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डैश आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा। टेबल इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। मन रखतान टेबल सब बोले डाटा स्टोर करके रखि थाए एमएस एक्सेस रे। सो आंसर इज ऑप्शन सी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टूल डू यू यूज टू क्रिएट ए क्वेरी ऑब्जेक्ट। आंसर इज सिंपल क्वेरी विजार्ड। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो। से कहला व्हिच टूल डू यू यूज टू क्रिएट ए क्वेरी ऑब्जेक्ट। आंसर इज सिंपल क्वेरी विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the checking operation performed on input data is called dash। से कहला जो चेकिंग ऑपरेशन हमर होइथाय परफॉर्म ऑन इनपुट डाटा ऊपर जो चेकिंग ऑपरेशन होइथाय ताको हमें कोन कहताउ, ताको हमें वैलिडेशन ऑफ डाटा कहताउ। ओके इनपुट डाटा में जहां देथिबा एवं तापर जो चेकिंग ऑपरेशन डी हुए ताको हमें कहताउ वैलिडेशन ऑफ डाटा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, this form displays multiple records, one per row in the form of window known as data sheet। से कहला केउ फॉर्म टी मल्टीपल रिकॉर्ड शो करथाय, डाटा शीट टी मल्टीपल रिकॉर्ड शो करथाय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द कॉलम्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल आर नोन एज फील्ड्स। इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट। से कहूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल रे कॉलम को हमें कौन कहताउ, फील्ड कहताउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेस ओएलई हमें कहिथिले ओएलई रे फुल फॉर्म लास्ट क्लासेस रे। ओके ओएलई ऑब्जेक्ट्स डाटा टाइप कैन स्टोर डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट यस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यस, साउंड्स यस, ऑल ऑफ द अबव। से कहला इन एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट OLE objects that data type can store all of the above।
लाइक से कौन सब स्टोर करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट भी स्टोर करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट भी स्टोर करता है, साउंड भी स्टोर करता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, এটা ବହୁତ ইম্পୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन मन रखिए। देखो आम जी भी आमर एमसीक्यू क्लास कर सब लास्ट एग्जाम गुड़ाक आसी, सो आम से ग्यादर करके आम क्लास आम एमसीक्यू करुचे। ओके, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपण मैंने जानी आमर एक्सेस रो ये फास्ट एमसीक्यू क्लास एक्सेस क्लास टी होई नथिला एवं लास्ट क्लास रे जहां भी हम सब होइतला सब ओएसएससी सीजीएल रे आसीतला। 20 टा क्वेश्चन हमर 11-12 टा क्वेश्चन आसीतला। ओके, सो बर्तन ए पार्ट ऑफ database that stores complete information about an entity such as employee, sales, orders, etc known as record। से कहला डाटाबेस रो गोटे पार्ट जे कि कंप्लीट इनफॉरमेशन स्टोर करके रखी था, जे लाइक एम्प्लॉय मानकर इनफॉरमेशन, सेल, ऑर्डर जहाँ भी सब स्टोर करके रखी था ताको हम कौन कहता हो, रेकॉर्ड कहता हो। देखो पूरा इजीली ट्रिक आम केमिति आम मन रखिबा, जहाँ आम सब स्टोर करके रखुचे ताको हम कौन कहूचे, रेकॉर्ड कहूचे। कोठी कोठी स्टोर होइक रेकॉर्ड रूम रे स्टोर होइक रहे। ओके, लाइक दैट एठी भी सही सेम रेकॉर्ड रे रुहे। ओके, ताको हम रेकॉर्ड कहता हो। A part of database that stores complete information about an entity such as employee, sales, orders, etc is known as record। Next, to create queries in access, केमिति हमें access रे query हमें create करिबा। You can drag and drop fields on query builders, yes। You can type the SQL command in SQL view, yes। You can use query wizard or design view, yes। All of the above is the answer। Okay, all of the above। Next question, a small button with 3 dots usually displayed at the right of field properties box is known as build button। Important question। से कहला गोटे small button with 3 dots usually displayed at the right of field properties box known as build button। Next question, the size of yes no field is always 1 bit। a question टी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रे थरे आसीतला। the size of yes no field is always 1 bit। this key uniquely identifies each record। which key uniquely identifies each record? primary key मन रखिदिबा, primary key uniquely identifies each record। important question। Next question, in a database table the category of information is called dash। आउथरे रिपीट करछि क्वेश्चन टी, in a database table the category of information is known as field। माने कितांतो the category of information is known as field। next question, important question। देखो 12 नंबर टा भी important मन रखि दिबा। a database language concerned with the definition of the whole database structure and scheme is known as dash। आउथरे रिपीट करछि, a database language concerned with the definition। देखो टिके आपण माने ट्रिक मन रखिथिबे, database language concerned with definition, ओके, known as DDL data definition language। तार फुल फॉर्म होला data definition language। से कहला a database language concerned with the definition of the whole database structure is known as data definition language। next question, which of the following is not a database object। देखो database object रे टेबल थाए, क्वेरी थाए एवं रिपोर्ट भी थाए database रे, बट रिलेशनशिप सेमती न थाए। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in one to many relationship the table in one side is called dash and on many side is called dash। देखो टिके भलो भाव रे ए क्वेश्चन मन रखंतु। से कहूची one to many relationship in the table। ओके, टेबल रे जतले one to many relationship थाए सेते बेले one side को कोन कहै जाय और many side को कोन कहै जाय आपण मान जानि छथि। one रो many, one parent always parent आ सेथरु हमर many माने child, এই টাইপ रे हमें एटा को मन रखिबा। ओके, सो इन one to many relationship sorry, the table in one side is called parent and on many side is called child। next question, this is the stage in database design where one gathers and lists all the necessary field for the database project। क्योंठा
Data definition. Important question. Answer is data definition. Next question. The two form layout types will always display multiple records at one time, are tabular and justified. Se कहला the two form layout types will display multiple records at one time, are tabular and justified. Next question. A dash enables us to view data from a table based on a specific criterion. Okay, answer is query. Eta mane rakhitha, important question. A query enables us to view data from a table based on a specific criterion. ओके से कौन गोटे क्वेरी आमको हेल्प करें डाटा गुड़ी को व्यू करने गोटे टेबुल रू ओके जिते आम किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया देथिबा ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी अप्लाइड इन एक्सेस डाटाबेस से कौन ए भितरु केउटी गोटे रिलेशनशिप टाइप नुहे जोटा कि एक्सेस डाटाबेस रे हमें अप्लाई करि परिबा देखंतु 1 to 1 अछि हमें करि परिबा 1 to many हे परिबो many to many भी होई परिबो सो ऑल ऑफ द अबव कैन बी अप्लाइड ओके टिके भल भाव रे क्वेश्चन मन रखि दिबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप कोछि बट एठी सब टाइप रो जेति के अछि ऑप्शन सब टाइप रो हमरो रिलेशनशिप कैन बी अप्लाइड इन access database 1 to many हे परिबो 1 to 1 भी होई परिबो many to many भी होई परिबो next question this option allows us to build a new table by entering data directly into the data sheet answer is data sheet view okay important question मन रखिथिबो एटा भी important question okay से कहला this option allows us to build a new table by entering data directly into the data sheet okay data sheet view रे हमें डायरेक्ट कौन करि परिबा डाटा एंट्री करि परिबा into data sheet next question to create queries in access अच्छा access रे हमें query केमती क्रिएट करि परिबा देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केमती करि परिबा ना फर्स्ट we can drag and drop field on query builders yes we can type the SQL command in SQL view yes we can use query user or design view all of the above answer is all of the above important question मन रखि दिबा से कहला query केमती हमें क्रिएट करबा एक्सेस रे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे नेक्स्ट क्वेश्चन following is not a database model टिके माइंडफुल देखो क्वेश्चन not a database model not a network database model yes it is a database model relational database model yes it is a database model sorry then object oriented database model yes this is one type of database model so these all are database model answer is none हेबो सेठी पचारछि which is not a database model ए गुडा को सब जाको गोटे database model okay then next question in table design view which key can be used to switch between the field names and properties panels okay in table design view which key can be used to switch between the field names and properties panels F6 key मन रखि तनु बहुत इंपोर्टेंट शॉर्टकट की F6 key can be used to switch between the field name and properties panel ओके स्विच करिवो फील्ड नेम रो प्रॉपर्टीज पैनल को जिबा पुनी प्रॉपर्टीज पैनल को फील्ड नेम को जाई परिबा सो का केउ शॉर्टकट की साहाय्य रे F6 साहाय्य रे ऑप्शन डी इज द आंसर ए डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन ए डाटाबेस टेबल नेम ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए टेबल नेम मस्ट बी यूनिक विद इन ए डाटाबेस रे टेबल नाटा गोटे यूनिक नेम रहबा दरकार ओके which of the field has with 8 bytes केउं फील्ड हमर डाटाबेस रे 8 बाइट थाए डेट एंड टाइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन संगमान सब मन रखिबा कारण एग्जाम बहुत पाखे आसलानी ओडा भल भाबरे मन रखिबा डेट एंड टाइम फील्ड has with 8 bytes okay next the database language that allows us to access or maintain data
in a database known as dash से कहला the database language that allows us to access or maintain data in a database क्यों लैंग्वेज टा हमको एक्सेस करने को देता है डाटा को मेंटेन आउ एक्सेस करने को देता है क्योंकि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आंसर इज ऑप्शन बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाटा तार मु फुल फॉर्म भी लिखि देछि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल आंसर हैला डीएमएल डीएमएल लैंग्वेज अलाउज अस टू एक्सेस और मेंटेन डाटा इन ए database नेक्स्ट क्वेश्चन a dash name must be unique within a database table name a table name is always unique within a database which of the following is not a field type in access देखो से क्वेश्चन आउथे पढंतु से कोची field type न ओके मेमो यस इट इज ए field type hyperlink OLE ऑब्जेक्ट ये सब field type बट lookup wizard टा field type नहीं ततले म लिखि छी lookup wizard रा काम हला lookup wizard establishes a relationship between tables ओके मन रखतांतो lookup wizard establishes a relationship between tables but ये field type नहीं field type हला मेमो hyperlink OLE object so answer is lookup wizard से कौन पचारला केउटी field type नुहे ए तीन चारोटी भीतर lookup wizard टी field type नुहे next question when entering field name how many characters that we can type in maximum 64 characters ओके जेतले field name में हमें एंट्री करिवा मैक्सिमम 64 कैरेक्टर हमें एंट्री करि परिबा मन रखिथिबा ए क्वेश्चन नी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डाटा हला ए भीतर केउ डाटाबेस ऑब्जेक्ट टी डाटा को होल्ड करके रखि दाए ओके आंसर इज ऑप्शन डी टेबल द डैश बटन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा 31 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन the dash button on the toolbox display data from a related table subform sub report क्यों बटन टी subform sub report option A the subform sub report button on the toolbox display data from a related table ओके ଗୋଟେ related table रे हमरो डाटा डिस्प्ले करथे है के subform sub report button Next question which is a database object to view change and analyze data in different ways देखो मन रखो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कहला क्यों database object टी view change and analyze the data in different ways answer is option A query এটা बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने query is a database object that view, change and analyze the data in different ways. Next question. Which of the following creates a drop-down list of values to choose from a list? Answer is option D, lookup wizard. Okay. से कहला lookup wizard creates a drop-down list of values to choose from a list. मन रखिबा. Next question. The expression builder is an access tool that controls an expression dash for entering an expression. ठीक है ट्रिक क्वेश्चन दी से कहै the expression builder is an access tool that controls an expression box for entering an expression. Okay next question a question दिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 35 a search value can be an exact value और इट कैन बी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाए ओके से कहला ए सर्च वैल्यू कैन बी एन एग्जैक्ट वैल्यू और इट कैन बी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ऑप्शन सी इज द आंसर सो ए सर्च वैल्यू कैन बी एग्जैक्ट वैल्यू और इट कैन बी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए फॉर्म इन एमएस एक्सेस व्हाट इज ए फॉर्म इन एमएस एक्सेस आंसर इज ऑप्शन बी से कहला गोटे फॉर्म एमएस एक्सेस गोटे फॉर्म कौन सेटा it is an input screen designed to make the viewing and entering data easier okay बहुत important question से कहला a form in MS Access is an input screen designed to make the viewing and entering data easier next question important question which is a sign
or symbol that specifies operator and values that produce a result. Answer is operator. Answer is operator. Se कहला which is a sign or symbol. An operator is a sign or symbol that specifies, operates and values that produce a result. मन रखी दियो क्वेश्चन डी. ओके. Which is used to calculate and restructure data for easier analysis of your data. It calculates the sum. Okay. Se कहला cross tab. Answer is cross tab. मन रखी दिबा. Cross tab is used to calculate and restructure data for easier analysis of your data. Okay. मन रखी दिबा. बहुत important question. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो क्रॉस टैब हैला से कैलकुलेट आउ रिस्ट्रक्चर डाटा को रिस्ट्रक्चर करता है बहुत इजीली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी. आंसर इज ऑप्शन बी 255. ओके. 255. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी 255. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डैश. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS ता फुल फॉर्म भी मु तळे लिखि देछि. मन रखि दे इंपोर्टेंट क्वेश्चन. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDMS. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डाला 40 नंबर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज. OLE. ओके. OLE field type can store photos. Next question. Which of the following store command to retrieve data from database queries? Okay. Important question है. Important question है. मन रखी दिबा. से कहला which of the following store command to retrieve data from database queries? Answer is option C queries. Queries always store command to retrieve data from database. Next question. Both conditions display on the same row in the design grid when dash operator is in use. देखो एठी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन. एठी गोटे देछि both condition. both माने कोन जोठी and लगला A and B. that means A and B both हे गला. so both conditions display on the same row in the design grid when and operator is in use. देखो and लगी गला माने both आसी जीवो A and B. Okay. so both conditions display on the same row in the design grid when and operator is in use. Next question. Which of the following is a method to create a new table in MS Access? Important question. से कहला ए भीतर केउंटी गुटे मेथड गुटे नुवा टेबल आमे तयारी करबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे. क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू. यस. डिजाइन व्यू रे जाके हम क्रिएट टेबल रे क्लिक करके भी नुवा टेबल रे तयारी करि परिबा. क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड रे मध्ये हम क्रिएट टेबल रे क्लिक करके काम करि परिबा. नुवा टेबल रे हम तयारी करि परिबा. क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा. यस. हमें गोटे टेबल एंटरिंग डाटा एंट्री करके भी हम तयारी करि परिबा. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. से पचारिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू क्रिएट ए टेबल इन MS Access. आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ओके. Next question. An access database object that is used to enter, view or edit records. Answer is option B. देखो ए क्वेश्चन गोटे सब मन रखिथिबा. ओके. से कहला an access database object that is used to enter, view or edit records. Answer is option B form. ओके. आमे फॉर्म रे डाटा एंट्री, व्यू और एडिट करि परिबा रेकॉर्ड गुडा. Next question. A part of database that stores only one type of data known as field. Okay. database रे जो field है सेतरे only one type of data हमें कौन करि परिबा स्टोर करके रखि परिबा. so 46 question is very important. answer is option B field. A part of database that stores only one type of data, that is field. Next question. Which of the following express correct order? देखो एटा बहुत थोर एग्जाम रे आसी छि हमरो. से कहला केउंटी करेक्ट ऑर्डर रे अछि. देखंतु
एटा असेंडिंग ऑर्डर रे अछि कैरेक्टर आंसर इज ऑप्शन ए कैरेक्टर देन फील्ड देन रेकॉर्ड देन टेबल देन फाइल देन डाटाबेस प्रथम आम कैरेक्टर जहाँ भी एंट्री करछे कैरेक्टर कैरेक्टर केउठी फील्ड रे एंट्री करछे फील्ड गुडा को नै कि रेकॉर्ड रेकॉर्ड को नै कि टेबल टेबल को नै कि गुटे फाइल फाइल को स्टोर करछे डाटाबेस रे ओके सो आंसर इज ऑप्शन ए मन रखि दांतु CFRTFD CFRTFD एमती मन रखिबा कैरेक्टर फील्ड रेकॉर्ड टेबल फाइल डाटाबेस कैरेक्टर फील्ड रेकॉर्ड टेबल फाइल डाटाबेस CFRTFD ये ला करेक्ट ऑर्डर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी टेबल इन रिलेशनल डाटाबेस contain a field or combination of fields that can uniquely identify each record. It is called as primary key. के पूर्व भी से क्वेश्चन ने हमें पढ़ी थिले से कहूची every table एटा मते इंपोर्टेंट क्वेश्चन 47 आटा 48 भी इंपोर्टेंट every table in a relational database contain a field or combination of field. ओके गोटे रिलेशनल डाटाबेस रे प्रति टेबल गोटे फील्ड रही है कि बहुत गुड़े फील्ड रही है एवं दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज नोन एज प्राइमरी की इज नोन एज प्राइमरी की ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मन रखिथिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए डाटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा जो डाटाबेस को हम कौन कहिता ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा ओके देखो ता तळे अछि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हला हमरो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओके सो लेफ्ट दैट आंसर इज ऑप्शन ए डाटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड records in a database is known as table okay से कहूची कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रेकॉर्ड केते गुडे रेकॉर्ड रो कलेक्शन ताको हमें टेबल कहिताओ ओके आंसर इज ऑप्शन सी सो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रेकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस इज नोन एज टेबल देखंतु संग माने ये सब हमरो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास रे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो आउ गोटे MCQ मध्ये आनिबा प्लस एवं फंडामेंटल क्लास रे भी आनिबा आशा करूची आजिर वीडियो आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो एवं सांग मानकु शेयर करिया को भूलिबेनी कंप्यूटर पार्ट टी बहुत इंपोर्टेंट रोल करिथाय एग्जाम रे जेमति मो फास्ट रो कहली हमें मैट्रिक समय रे जेमति हमर 10th लेवल रे जेमति हमर संस्कृत जदी हमें नैथिबा तो संस्कृत रे जेमति हमें भलो मार्क आनी पारुचे ओके एवं ता साजरे हमर डिवीजन टी भी बा हमर ग्रेड भी कैलकुलेट होउची सेमति हमर एई एग्जाम गुडा रे कमिंग एग्जाम गुडा करे हमर कंप्यूटर क्लास टी कंप्यूटर क्वेश्चन गुडा को बहुत इंपोर्टेंट रोल करिवो आमे जदी भलो भाव रे मन रखिथिबा डायरेक्ट हमर आंसर आमे चूज करि परिबा एवं हमर कट ऑफ पई हमको हेल्प करिवो सो आपण माने सब्सक्राइब करिवा को भूलिबेनी एवं सांग मानकु शेयर करिवा को भूलिबेनी थैंक यू।